ओके आ जाओ गुलमीना, शुरू करो पहले क्वेश्चन से प्लीज। When light from two lamps falls on a screen, um, no interference pattern can be obtained. Why is this? ओके hmm so you have the light, the lamps are not point source. This is not necessary. Lamp can radiate in all direction. Lamp emit a light of the different amplitude. Okay, so for the interference, you require a coherency. Okay, the light from the lamp is white light. White light also interferes. Okay, and different amplitude of the light will also interfere. Okay, but the light with non-coherency will 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 interfere, but the interference pattern will be inconsistent. Okay, so a better way is to say the inconsistent interference pattern. Okay, so the C, fine. Imad, जरा read कर लो Imad. A diffraction grating is used to measure the wavelength of monochromatic light as shown in the diagram. The spacing of the slits in the grating is 1 to the exponent 6, -6. The angle between the first order diffraction maxima is 70. What is the wavelength of the light? Hmm. Okay, so this is a diffraction grating question. Okay, and you should know that the formula that relates the diffraction grating wavelength and order is n lambda is equals to d sine theta, where theta should be the angle from the zeroth order. Okay, so this angle will going to be 35. Okay, Imad समझ रहे हो ना? 35. Now, so the angle between the first order maxima is 70. Okay. Okay, so we can take 35 and we will take n as 1. Lambda is to be found. Okay, so they're saying the spacing of the slit in the grating is this much. Okay, so d is 1 exponent -6 sine 35. Okay, just solve it. How much? So 5.73 times exponent -7. Okay, convert it in nanometers, so you'll get 573 or something. Okay, just press ENG, it will convert itself. Okay, okay. Ajo, Irfan, read this one. An interference experiment. Two In an interference experiment, two slits are illuminated with white light. What is seen on the screen? Hmm. So you have the white light. So if you say A, the central fringe is black with black and white fringes on each side. This is not possible. Central fringe will always be a bright fringe, okay? Please keep in mind that. So for B, the central fringe is black. No, still not possible. The center fringe is white, okay, with the black and white fringes on each side, okay. Look possible. The central fringe is white with the colored fringes on each side. Okay, yes. Because you're using the white light, so it will show the different colors as well. Okay. We also understand the concept in the in the notes. Okay. I showed you a picture of the experiment and the screen using the white light. Okay, so there will be a white light, there will be center bright spot with a white light, and there will be a colors and then a dark spot and then colors. Okay, so D, fine. Let's move on to this one. um, क्या नाम है गुलमीना, आज जरा रीड कर लो. Microwaves of wavelength 3 centimeters are incident normally on a row of parallel metal rods
The separation of the rods is 8 centimeters. The first order diffraction maximum is observed at an angle of 22 degrees to the direction of the incident waves. What is the angle between the first and second order diffraction maxima? Okay, so if I draw diffraction maxima, so we have the diffraction grating right here, and this is the central order, this is the first order, this is the second order. Okay, now um they give you the wavelength, and the separation of the rod is 8 centimeters. Okay, metal rod. Okay, so this will going to be your slit separation. The first order maximum is observed at an angle of 22. Okay, so this angle is 22, and what is the angle between the first and the second? Okay, so they are asking for this angle. Okay, so now n lambda is equals to d sine theta. Okay, so we are actually interested in the second order. Okay, so I'm putting n2, and the lambda, the wavelength of the microwave is 3 exponent negative 2. Okay, is equals to, so the D is okay. Now the rods, these parallel metal rods are actually acting as a grid. Okay, and their separation is 8 centimeters. So 8 exponent negative 2. Right? You know that if you have a smaller wavelength, okay, so you use a smaller separation. If you have the larger wavelength, you use a larger wavelength. Use the larger separation accordingly. Right? So this is how the this is how the diffraction occur. Okay, and sine theta. Okay, so 3 2 is 6. 6 exponent negative 2 divided by 8 exponent negative 2. Exponent and exponent goes off. You can take sine inverse of it. Right? Sine inverse 3 over 4 is how much? 48.6. 48.6. Okay, so this whole angle is 48.6. Okay, always keep in mind whenever you apply this formula, so this will always give you the angle from the zeroth order to the order you are working at. Okay, so this is 48.6. Now the angle for the first order is 22, so if you subtract it with the total angles, you'll get 20 something, 26. Yes, G, sir, 26.6. 26. Very good. Very good. Okay. Um, Imad से read कर लो, Imad, this one. The lines of a diffraction grating have a spacing of 1.6 exponent negative 6. A beam of light is incident normally on the grating. The first order maximum makes an angle of 20 degrees with the undeviated beam. What is the wavelength of the Okay. incident light? With the undeviated beam. So this is the undeviated beam and this is the first order. Are you getting? Imad? समझ रहे भाई? 20. And just put it in the formula, n lambda is equals to d sine theta. I know okay, you guys uh you guys just forget what we studied, but okay, fine, no problem. So the first order n is 1, lambda is to be found, and d is supposed to be 1.6 exponent negative 6. And since they're saying the angle the first order makes with the undeviated waves is 20 degrees. Okay, just solve it. Hmm. Come on, quick, quick, quick. Negative 6 sine 20. I am getting 547, 550. 5.47. Yeah. Okay, fine. Okay, Irfan, your turn. Irfan, where are you? Fringes of separation Y are observed. Wait, can you hear me? Yeah. Okay. Fringes of separation Y are observed on a screen 1 meter from a Young's double slit arrangement that is illuminated by a yellow light of wavelength 600 nanometer.
At which distance from the slits would fringes of the same separation Y be observed when using blue light of wavelength 400 nanometer? Okay. So now this is the experimental setup. Okay. And these are the fringes. Okay. And this is Y. What they're saying, this as Y. Okay. Are observed when your screen and your Young's double slit. So this is the double slit, and the screen is 1 meter apart. Okay. So we have the formula y equals to lambda d over s. Okay. So this is the formula for Young's double slit and not the diffraction grating. Okay. Now they want at which distance from the slit. Okay. So they're varying this distance. Okay. Okay, so at which distance from the slit would fringes of the same separation y, so y, they're keeping y same, observe when using the blue light. They're changing the wavelength, they're keeping y same, and they're also keeping the apparatus same, which means the slit separation, which is s. Okay, so s and y both are same variable. Okay, so we can say that y times s is equals to lambda d. Okay, and lambda d of for the both experiment remains the same. So for one of the experiment we have 600 nanometer. I'm not converting it into meter. 600 nanometer, and it is at a distance of 1 meter. Okay, so this is one of the case. Okay, so for the other case, this should be constant. Okay, for the other case, we have 400 nanometer of light of wavelength, and we don't know the length, okay, or the separation between the slit and the screen. Okay, so you can equate both the equation and solve them simultaneously to get your answer. Okay, so 400 nanometer is times 1 is the same thing, but is equals to 400 nanometer is times d. Okay, so nanometer goes out. 600 divided by 400 is equals to d, right? So 2 over 3, which is 1.5. Okay, Irfan, are you getting? Guys, are you all getting? Yeah. Right. Ajo, Bulmina. A teacher sets up the apparatus as shown to demonstrate a two-slit interference pattern on the screen. Which change to the apparatus will increase the fringe spacing? Okay, fringe spacing is y. Okay, so you want to increase the fringe spacing. Okay, so this is what you want. Now, how you can get it? Okay, so basically they are saying this as D and not R. Okay, and this as Q and not S. Okay, now, so either you can increase R, this will increase Y, or you can decrease Q, so this will also increase Y, or you can increase lambda, this will also increase Y. Okay, so these are the three possibilities, right? Now, increasing P is not related. Okay, P is not related with the distance or with the separation, yeah, with the fringe spacing. Okay, decreasing the distance q. Okay, so if you decrease the distance q, yes, you'll the separation between the two fringes will increase. Decreasing in the distance r, no, you have to increase it. Okay, so b is the only possible option. Okay, you have to increase the light wavelength, you have to increase the distance r, or you have to decrease the distance q. Okay, so b. Fine, समझ में आया? सर R का आपने क्या कहा था? Bro, R is directly proportional with Y, na? So to increase Y, तो सही है, वो you have increase to किया increase it. जाएगा. Okay, good. Right, आगे आ जाओ इमाद. इमाद कहाँ हो? इमाद तो है नहीं. Okay, मैं read कर लेता हूँ. A parallel beam of white light is incident normally. पढ़ I was लो. reading. पढ़ लो.
A parallel beam of white light is incident normally on a diffraction grating. It is noted that the second order and the third order spectra partially overlap, which wavelength in the third order spectrum appears as the same angle as the wavelength of the 600 Newton meter in the second order spectrum. Anji, any idea, bro? So it is noted that the No, second sir. order and the third order spectra partially overlap. Okay, so partially overlap means their angle will going to be the same. Okay, and since you are using the same experiment, so D will also be the same. Okay, so you can either say okay n1 lambda 1 should be equal to n2 lambda 2, right? Because d and sine theta are same for both the cases. Okay, like you have to make two equations, one with n1 lambda 1 n1 lambda 1 d sine theta and n2 lambda 2 d sine theta, and both d sine theta are same, so you can equate the two equation and you'll get this one. Okay, now but we don't know which of the wavelength of the light makes the third order and which of them uh, uh, um, forming the second order. Okay, so appear at the same angle. Hmm. So if I assume, okay, n lambda is equals to d sine theta, this is a formula. Okay. So if I assume that I have, you can, okay. So I'm considering third order and I'm taking the red light. Okay. So third order and I'm taking red light. Okay. 3 exponent negative 9. Okay. What's the value you are getting for this one? And the other one is like okay, I'm considering second order for the other wavelength. जरा पहले इसका बता दो कितना आ रहा है, पहले इसका बता दो. How much we are getting for this one? Sir, 1.8 exponent negative 6. 1.8 exponent negative 6. Fine. And if I consider, so I am taking the other light, the second order of the other light, and if I just match it with 300 nanometer, or with 400, or with 500, or with 600, with 300, 400, 600, and 900. So if the answer matches, then fine, that will be your answer. If the answer doesn't match, then I have to switch the orders. But there should be easy way. Hmm. Which wavelength in the third order? Okay, if we just cross check, so 2 into 2 times 3 is um 6 exponent negative 6. Okay, and 2 times 4 is 8, 2 times 6 is 12, and 2 times 8 is 2 times 9, negative 9, So you get negative 7. 1.6, for which 600 exponent negative 9. So I For am the 2 times 300 negative 9. 2 times how negative 9. Okay, so this one is negative 9. नहीं ऐसे So नहीं होगा ऐसे. 7 negative 7. Wait. Which wavelength in the third order appear at the same angle as the wavelength is. Oh man, sorry. So they're saying which wavelength in the third order. Wait.
Wait. So for this question, they said that you have the wavelength of 600 meter, and this 600 meter wavelength is actually producing the second order spectrum. Okay, so this means you have to find out which wavelength is producing the third order spectrum. Okay, so you can use n1 lambda 1 is equals to n2 lambda 2. So for n1 I'm considering the red light, which is, let's say, which is making two second order, and it is at an it has a wavelength of 600 nanometer exponent negative 3, just nanometer. Okay, and for the blue light, or for any light, any random light, we don't know whether it is blue or something. So it is making the third order. Okay, and lambda 2. Okay, so we have to find that out. So lambda 2 is 2 2 3 is 2 6 is 1200 nanometer divided by 6 divided by 3, 3 ones are 3, 3 fours are, so lambda 2 is 400 nanometers. Okay, so B. Okay, yeah, it's clear. Any problem, Imad? Yes. Fine. Okay, Irfan, your turn. Okay. Light of wavelength 700 nanometer is incident on a pair of slits, forming fringes 3 millimeters apart on a screen. What is the fringe spacing when light of wavelength 350 nanometer is used and the slit separation is doubled? Hmm. So slit separation. Okay, so which mean y is equals to lambda d over s. This is the formula that we have to use. Okay, now um so they give us the wavelength of the light, forming the fringes 3 meter apart. What is the fringe spacing? What is the fringe spacing? They are changing this thing when the wavelength of the light. Okay, so the separation with the slit. Okay, so this D and this S is the same. Okay, for both the experiment. Okay, while you are using the 700 nanometer light, or you are using 350 nanometer of light. Okay, so we can say that y1 over lambda 1 is equals to y2 over lambda 2, right? Y2 over lambda 2, and we can just do the cross multiplication. Okay, so when we use the 700 nanometer light, it form the fringe that are 3 exponent negative 3, or 3 millimeter apart, and the wavelength was 7 exponent negative 9. Okay, and for y2, y2 is unknown, and you have to divide it, so just multiply over here. So 350 exponent negative 9. Okay, just do the calculation. So ones are and twos are, and when you take 2 up, so 6. No, 1.5 I'm getting. 1.5. Yes, 1.5. Yes, so it should be B and not A. Okay, clear? If unclear, okay. So It's this, 1.5, right? yes, Yeah, okay. Fine. right. Got it. Okay, so we did this type of question previously. You just need to separate this, and the angle between the undeviated light and the order, whatever the first order is 6 and 30. Okay, then you have to use n lambda is equals to d sine theta, and everything is given. You just need to put it and solve it. Okay, okay. Gulmina, read kar lo. Monochromatic light is incident on a diffraction grating and a diffraction pattern is observed. Which line of the table gives the effect of replacing the grating with one that has more lines per meter? Hmm.
So just write the formula in front, and lambda is equals to d sine theta. Okay. Now, which one that has more lines per meter? Okay, so if you have more lines per meter, so that will decrease your d. Okay, sorry, not increase, decrease your d. Okay, because if you have, let's say, if you have, let's say, three lines, one, two, and three, in a distance of 1 centimeter. Okay, 1 centimeter. So each should be 0.3 0.5. Okay, 0.5 and 0.5, right? And this is your d, the 0.5 is your d, right? But if you increase the number of line from 3 to, let's say, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, in the same distance of 1 centimeter. Okay, so now the distance between the two slits will going to be 0.1. Okay, so if you are replacing the grid with a more number of lines, so you are actually decreasing your d. So n lambda over sine theta is equals to d. Right now, number of the order of the diffraction visible. Okay, so d is directly proportional to n, which is the number of the order, and d is inversely proportional to the angle. Okay, so your your order diffraction patterns when which line gave the effect of replacing the more per lines. Okay, so you will get, if you are decreasing that, so n will also decrease because they both are directly proportional, and this will increase. Okay, गुलमीना getting? सही Yes. सर So ये ना, ये बात समझ में आई ना कि more number of lines means you are decreasing d. Okay, जी सर fine. uh Fine. Okay. Let me just skip it and सर also आप skip it. ये रिकॉर्डिंग मुझे भेज सकते हैं प्लीज Bro, ये मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा ना, क्यों टेंशन ले रही हूँ? ओह अच्छा सही सर But not foreign. I probably upload in a week or two maybe, क्योंकि और दूसरे भी बैच है, उन सब से भी क्वेश्चन करवाने हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि पूरी वर्कशीट करवा लूँ सबसे, फिर उसके बाद जो है ना सबको मिला मिलू के, और फिर आई अपलोड ऑन द यूट्यूब. सही सर ओके, आ जाओ इमाद. इमाद, योर टर्न. The interference patterns from diffraction grating and double slit are compared. Using the diffraction grating, yellow light of the first order is seen at 30 degrees to the normal to the grating. The same light produces interference fringes on a screen 1 meter from the double slit. The slit separation is 500 times greater than the line spacing of the grating. What is the fringe separating on the screen? Hmm. So how to solve? But I think Compare. you use n lambda d sine theta. Come on. And lambda is equals to d sine theta, but using the diffraction grating, yellow light of the first order, okay, and the same light produces interference fringes on the screen 1 centimeter from the double slit. The slit separation is 500 times greater than the line spacing. What is this? Okay, fine. So basically, you have to relate both the formulas. Okay, y equals to lambda d over s. Okay, and you have to relate these two formulas. So they're saying the first order is seen. So the first order n is 1 is seen at an angle of and you have the wavelength. What is the wavelength? So the wavelength is lambda. Okay, it's not given. And d is going to be d only also. Okay, and sine theta is 30. Okay, and 30 is basically 1 over 2. Okay, so lambda is equals to d. Instead of sine 30, I'm just writing 1 over 2. Okay, or you can also write, you can also shift 2 to this side, so it will be just this equation. Okay, this is the first equation. Right now, for the second equation, um we have y, which is what we want. Okay, and
lambda is still unknown. D is given as the same light produces the interference pattern on the screen 1 meter from the double slit. So the distance between the double slit and the screen is 1 meter, okay, and S. So over here, S is going to be the slit separation, okay, and they're saying the slit separation is 500 times greater than the line spacing. So if we consider the line spacing is D, so we can say that 500 times greater than, okay, so we can say 500 of D, okay, and you can now replace D with its value. Y is equals to lambda over 500 times 2 lambda, okay, lambda and lambda goes off, and 1 over 1000, so 1 exponent negative 3. Yes, Imad, getting? Yes, Imad, not getting, getting, Well, not getting. not getting. And what is you, which of the things not getting? Sir, the y equals lambda d over s. That part. Y equals to lambda d over s. Bro, actually, we have two different experiments, okay? So we have the diffraction grating experiment, so that I use this formula, okay? And I have Young's double slit experiment, so I use this formula, okay? So this is the detail of the diffraction grating, so I put it in, and मेरे पास जो है, this is the simplified form from the diffraction grating formula, okay? So when I just now फिर उसके बाद they also give us D. This is your D in this experiment, so I replace the D with it. Okay, lambda is not given for both the experiment, so I just keep the lambda same. And S is the slit separation. Okay, slit separation meaning if you have, come on, wait, if you have the double slit like this, so this is your S. Okay, this is your S, and they're saying the slit separation is 500 times greater than the line spacing of the grating. Okay, so this D is the line spacing, this is the line spacing, and they're saying the S over here is 500 times greater than that D. Okay, so I can also write this as equals to 500D. Okay, and I can replace it. Okay, 500D, and instead of D I can use its value. Okay, समझ रहे भाई? Am I getting? Yes. Fine, so this is how. Okay, अगला भी रीड कर लो, ये बात अगला भी रीड कर लो. A two-slit arrangement is set up to produce interference fringes on the screen. The fringes are too close together for convenient observation when a monochromatic source of violet light is used. In which way would it be possible to increase the separation of the fringes? So you just need to look at this relation. Okay, and you want to increase this parameter. Okay, getting ना, ये समझ में आ रहा है पढ़ के ना question, that Sir, but in. separation of fringes is S, right? No, this is a slit separation. Slit separation is where the light get diffracted, okay? And fringe spacing, why is it's actually on the screen where you have two or more bright spot, okay? And like bright spot here hota hai, and then dark spot in between, and then bright spot and then dark spot and so on, okay? Are you getting that? Yes. Not getting. Kaddu. Wait. Let me show you. Let me show you. Young's double slit experiment diagram. Okay, 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 okay. 3D. अबे भाई ये ऐसा गलत गलत दिखा रहे. Okay, so this is how it looks like. Look at this one.
Okay, so first of all, this is your experiment, okay? Um, this is your experimental setup, okay? Although you have a photon, so this is your experimental setup, okay? These are your double slits, okay? Imad, screen दिख रही है ना? Yes, sir. Okay, and when the light, they're saying the light is photon, okay? So photon is a particle of light, okay? A2 में हम पढ़ेंगे जाके. So when you incident the light on the double slit, so the light get diffracted at double slit, and they form on the screen, or they appear on the screen in the form of bright and dark spot, okay? Getting? Now, the bright and the dark spot looks like this, like this. You can see over here. So this is a central bright spot, and there's a little bit of portion where there's no light, okay? Then a dark spot, then no light, then a dark spot, and then no light, okay? Is it visible? Look at this one, right? Yes, getting? Yes, sir. Here it is. This is also an experiment, okay? So so you can see that, okay? So this whole thing is a first order, okay? Then this is my cursor is visible to you. Yes. Yes. Okay, so this whole thing, ये बड़ा वाला जो है first order है, and then we have the black spot. Okay, so this is a dark fringe, and this whole thing is a bright fringe, and then this is a dark fringe. Okay, so let me show you some more. Okay, idea हो गया कि क्या क्या हो रहा है? Look at this one. So this whole thing from this point to that point is the zeroth order, or the central maxima. Okay, then we have the bright or destructive interference. Then we have the first order, or yes, or the second bright spot, and the third bright spot, and so on. Okay, clear? Is that clear? Any problem? Yes, sir. But sir, can you explain like the formula and like what is SD and those stuff? Okay, so over here, um, let me just wait. So let's consider this picture, and let me paste it right here. Okay, and alongside with this picture, and wait, no, and paste it right here. Okay, ये मैंने उसमें भी ली हुई थी, right here. Okay, let's come back right here. Now, so if you look at, this is the experimental setup, and this is the top view. Okay, this is not the side view, this is the top view, which I showed you in the pictures was a side view. Okay, so this is the top view. Okay, now this over here is a slit. Okay, this over here is a slit, right? Now this is a slit separation. Okay, this is a slit separation. Are you getting that? This is your S, Imad. Yes, समझ में आ रहा है? Yes, yes. Sorry. Yes. So this is your S, slit separation. It should always be at the slit, okay? And ये जो light है, the light is moving from the slit toward the screen and forming a lot of constructive and destructive interference, okay? And let's say this is the screen. This is the screen, okay? So on the screen, you will see this, okay? You'll see this pattern, okay? So this is one bright spot, or central bright spot, okay? Spot. And this is the second bright spot, okay? Okay, or you can say this is one fringe, this is the other fringe, this is the third fringe. Okay, so these are the fringes. Okay, fringe. Okay, so these are the fringes. Okay, so and we take the fringe separation as, over here, this will be your y, this will be your y. Okay, this will be your y, and this will be your y. Okay, or this will be your y,
right? So these are your fringe spacing. Fringe spacing mean where the light appears, or like between the two brightest spot, whatever what is the distance. Okay, so this is your fringe spacing. Okay, clear? Any problem? No, Fine. sir. And the formula says y equals to lambda d over s. Okay, so s is related with the slit right here. Okay, and d is basically this distance. D is basically this distance. Okay, from the slit to the screen. Okay, and lambda is the wavelength, and wavelength is it should be wavelength of the monochromatic light. Okay, is that clear? Yes, sir. Fine. Any problem? No. No problem. Fine. Challenge. So now, okay, please get back to this question quick. So a two-slit arrangement is set up to produce interference fringes on the screen. The fringes are too close together for convenient observation. When a monochromatic light or violet light is used, in which way would it be possible to increase the separation of the fringes? So that means why? Yes. Um, sir, I will use like values here. I can't do it by formula. No, just look at the relation now. Y is directly proportional to lambda, y is directly proportional to d, and y is inversely proportional to s. Okay, so if you want y to be greater, then your lambda should be higher, or your d should be higher, or your s should be lower. Okay, so these are the options, right? Sir, Now then you increase D. increase d. Okay, increase the distance between the two slits. Okay, this is not the possible option. Okay, no, like you have to look at the option increase. Look, for the first option, decrease the distance between the screen and the slit. So they are decreasing the d. Okay, so you'll get y to be decreased. Okay, increase the distance between the two slits. If you increase the distance, so you will get lower y. Okay, and increase the width of each slit. ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Use the source of red light. Okay, so you know that violet light has a wavelength of around 400 or 350 nanometers, okay? And red light has a wavelength of 600 nanometers. So they're basically saying you're increasing the wavelength, so which can increase your Y, okay? Is that clear? Yes. Fine. Okay. Let's move on. Just two, three questions more. And then one, two, three, four. Okay. Just last four questions. Irfan. Monochromatic light illuminates two narrow parallel slits. The interference pattern which results is observed on a screen some distance beyond the slits, which change increases the separation between the dark lines of the interference pattern. Hmm. Dark line of the interference pattern. Okay. So they are actually saying how you can increase the fringe spacing basically. Okay. So again, you have the formula y is equals to lambda d over s. So either you can okay, so the first option decreases the distance between the screen and the slit. So if you decrease the distance d, so your y will decrease. Increase the distance between the slits. So if you increase the distance between the slit. Okay, fine. So this is increase the distance between the slits. No, no, sorry. So if you are increasing the distance between the slit, S is the slit separation. Okay. So if you're increasing the distance between the slit, you will again get a lower Y. Okay. Using the monochromatic light of higher frequency. Higher frequency means lower wavelength. Okay. So lower wavelength mean Y is also lesser. Okay. Using the monochromatic light of the longer wavelength. Longer wavelength works. Okay. Irfan getting na? Irfan? Yeah, Fine. I got it. Okay. So this one. Irfan, you try. A narrow beam of monochromatic light is incident normally on a diffraction grating. Third order diffraction beams are formed at angles of 45 to the original direction. Mhm. What is the highest order of the diffracted beam produced by this grating?
Okay. Can you tell me the angle at which the highest order form? Uh, 90 degrees, right? Very good. Very good. 90 degrees. Okay. So you can say that n1 lambda or n okay, fine, n lambda is equals to d sine theta. Okay, so now we have two different scenarios, one with a third order and one with a higher order. Okay, so n is actually changing, but we are not changing the light, so lambda is constant. We are not changing the experimental setup, so d is also constant. Okay, so we can relate these two parameter, which is n1 over sine theta 1 is equals to n2 over sine theta 2, right? Irfan, getting? Sir, Yes. बोलो बोलो. can I go to the bathroom? Okay, जल्दी आओ. Okay, so n1. Okay, so n1 is third order, okay, and sine theta 1 is 45, okay, and n2 is unknown, and sine theta should be 90, okay, and sine 90 is 1, so you can just replace it, and 3 over sine 45 and is under root 2 over 2, under root 2 over 2, so if you take it up, so it will be 3 times 6 over under root 2 is equals to n. So what is the exact value of it? 6 over under root 2. That's 3 root 2. Yes, how much? Like, what is the value in decimals? Oh, 4.24. 4.24. Okay. So that means we got the four orders complete, four complete orders, and the fifth order is start forming. Okay. Is that clear? Right? Yeah. So this is your B. Okay. So if you like, if let's say, assume that N2 is coming 4.8. Okay. So in that case, you're not allowed to round up, okay? You cannot go to the fifth order because the fifth order is incomplete, okay? So you still say it is the fourth order, okay? Not the fifth order. Clear? Getting that? Yeah. Fine. Ajami. Imad, read Kerala, please. A diffraction grating has n lines per unit length and is placed at 90 degrees to the monochromatic light of wavelength lambda. What is the expression for theta, the angle to the normal to the grating at which the third order diffraction peak is observed? Hmm. The So n lambda is equals to d sine theta. This is what you have to use, right? Now, what is the expression? Okay, so they're saying the diffraction grating has n lines per unit length, okay, and is placed at 90 degree. Okay, this is not the 90 degrees which we use for this step. Okay, fine. And the wavelength is given. Okay, they're saying the third order, so n is 3. Okay, lambda. What is the expression for theta? Lambda is remains the same. What will be your d? What will sir be n your d? N should not be n only. Okay, look, n, look, the capital N you're saying, right? It's actually no. Look, so this is let's say a unit length. This is a unit length. Okay, this is a unit length which is mentioned in the question. Okay, and we have n lines per unit length. So let's say one, two, three, four, and five. Let's say these are n lines per unit length. Okay, but we are not interested in n lines. Okay, we are actually interested in the distance between the two lines. Okay, okay, getting? Am I getting? So we are actually interested in this distance. Okay, we are actually interested in this distance and not the distance and not the n number of lines per unit length. Okay, so we can say that if we have n lines per unit length, okay, so what will be the separation? What will be the separation d, small d, between the two lines? Okay, which I place as 1. Okay, now if you just do the cross multiplication, so you'll get
D is equals to 1 over n. Okay, so you can replace D with 1 over n, 1 over n and sine theta. Okay, and you can make sine theta the subject. So 3 lambda is equals to sine theta. Okay, sine theta. So this should be B. Okay, नहीं समझ में आया, नहीं बात नहीं समझ में आया ना? जैसे मान No, sir. नहीं समझ में आया. Okay, देखो. So if you have a unit length of, let's say, 1 centimeter, okay, and I'm saying we have 500 lines in it, 500 lines in it, okay, and I'm using the wavelength of the light as 600 nanometers, okay, and that form the third order maxima, okay, that form the third order maxima, n equals to 3, okay. Now you use a formula n lambda is equals to d sine theta, yes, ऐसे ही होगा, right? But quick. Yes, yes. Now, n is 3, lambda is 600 exponent negative 9. But what will you take d as? Yes, Ahmad. You have to find sine theta. What will be your d? Hmm. Quick. Sir, I don't know. Okay. So basically, you have, let's assume that we have these two lines and we have a lot of the lines similar to this one. Okay. But d d is basically this distance. Okay. This one distance. Okay. Yes, Ahmad. So D is this one distance, okay? So if the question says that we have 500 lines in 1 centimeter or 1 exponent negative 2, then what will be that one distance length, which is D, correct? This is just the cross multiplication. नहीं समझ में आया अभी भी? No, sir, I understood. पक्का? So D is basically referring the distance of one or one distance, which is the distance between the two lines. Okay, that is one distance. Okay, so I took this one distance as the D, which is the distance between the gratings. Okay, and they give you the total distances. Okay, so you can just do cross multiplication. So 1 exponent negative 2 divided by 500 gives you D. So you can put it in here. Okay, is that clear? Yes, and this is Yes. what I did over here. Okay, so D, just keep in mind, if you guys have difficulty in understanding this concept, so just keep in mind that D is equal to 1 over capital D, and capital D is the total number of lines. Okay, or 1 over n, you can also say that. Okay, clear? Okay, fine. So this is how you can understand this concept. Okay, fine. आ जाओ. कंसा जरा रीड कर लेना प्लीज थोड़ा जोर से. A diffraction grating with n lines per meter is used to deflect light of various wavelength lambda. The diagram shows a relation between the deflection angles theta for different values of lambda in the nth order interference pattern. What is the gradient of the graph? ओके. अच्छा देखो, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि भाई तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट कौन सा है. सही है. तो देखो, दो अलग अलग फार्मूला हमने देखे थे. सही है. यंग्स डबल स्लिट का फार्मूला हमने देखा था. सही है. और डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग हमने फार्मूला देखा था, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा. सही. ये हमने देखा था. और सही हो गया. और हमारे पास जो है यंग डबल स्लिट का हमने देखा, y इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर एस. ओके. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग है तो हम उसको यूज कर लेते हैं. राइट. अच्छा खंसा, मुझे बता सकती हो कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके बराबर होने वाला है? यस खंसा. खंसा कहाँ हो यार, कुछ तो बोलो. सोच रही हो? कैसे सोच रही हो? सोच में क्या ला रही हो? वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को डिवाइड करो जरा इस ग्राफ के.
तो क्या बनेगा, साइन थीटा ओवर लैम्डा, राइट। तो यहाँ से साइन हम्म, थीटा और लैम्डा को सब्जेक्ट बना लो, सही है। सो अगर साइन थीटा ओवर लैम्डा करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, एन ओवर डी इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर लैम्डा, ऐसे ही बच रहा है। एंड हम ये कह सकते हैं कि जी। साइन थीटा ओवर लैम्डा हम इसको ग्रेडियंट से रिप्लेस कर दिया अगर, हम्म, क्लियर हो गया। अच्छा जी, ये तो ग्रेडियंट आ गया, लेकिन यहाँ पे ग्रेडियंट में डी नहीं आ रहा, एन आ रहा है, सही है। तो हमें अब रिलेट करना होगा सबसे पहले कि डी और कैपिटल एन का क्या रिलेशन था। अब अगर आप वो याद करो, दो फार्मूले मैंने लिखवाए थे, एक तो ये फार्मूला, दूसरा डी इज इक्वल टू कैपिटल डी ओवर एन, ऐसे ही था। जी। अब इन्होंने कहा है नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर, सो डी कैपिटल डी क्या हो जाएगा, वन। ओके, एनी प्रॉब्लम इसमें? नहीं। ओके, उठा के रख दो इसमें, एन डिवाइडेड बाय डी की जगह आपने रख दिया वन ओवर एन, सही है। और जब ये रेसिप्रोकल हुआ, सो कैपिटल एन ओवर एन, सही हो गया। कंसेप्ट क्लियर है? जी। ओके, परफेक्ट। अच्छा जी, ये कर लो, ये कर लो, कौन मुबीन कर ले प्लीज, रीड कर ले यार। Using monochromatic light, interference fringes are produced on a screen placed a distance d from a pair of slits of separation a. The separation of the fringes is x. Both a and e are now doubled. What is the new fringe separation? ओके, सबसे पहले तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहले वाला है दूसरा वाला, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, या वाई इक्वल टू लैम्डा डी ओवर एस। Very same question. बिल्कुल देखिए, Pair of slits है ना, तो दो slits होते वेरी हैं. गुड, डबल स्लिट वाला फॉर्मूला लगेगा। सो वाई इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर एस, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, उसने कहा कि बोथ ए एंड डी आर डबल्ड। उसने कहा है कि ए इज अ स्लिट सेपरेशन, वो एस को ए से रेफर कर रहा है, ओके। मोस्टली एस को ए से रेफर करते हैं और वाई को एक्स से रेफर करते हैं, कभी कभार यार ये मेरा भी आगे पीछे हो जाता है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। तुम कोई भी फॉर्मूला लिखो तो ये वाला लिख लो तो ज़्यादा, ये भी अपने पास लिख लो तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, सही, क्योंकि यही बात बहुत दफ़ा आ रहा होता है। लेकिन इसके ना डिफरेंट फार्मूलाज वो है, क्या बोलते हैं, मशहूर है, सही है। तो तुम उस हिसाब से देख लेना, ए लेवल्स के अंदर ये वाला चल रहा होता है, मैंने पता नहीं कहीं देखा था, वो वाला लिखवा लिया मैंने, सही। मतलब सबका सेम है, ओके, वेरिएबल डिफरेंट है, खैर। so what you're doing, both a and d are double down, so x is equals to um, a को d को डबल कर देते हैं और a को भी डबल कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे पास, राइट। तो हमारे पास ये b बन गया, सही है। सेपरेशन सेम की सेम ही रहेगी, क्लियर हुआ भाई। जी. अच्छा जी, आगे आ जाओ, शहीद जरा रीड कर लो प्लीज। Third 27. हाँ जी। A double slit experiment using light of wavelength 600 nm results in fringes being produced on a screen. The fringe separation is found to be 1.0 mm. When the distance between the double slits and the viewing scene is increased by 2.0 meters, the fringe separation increases to 3.0 millimeters. What is the separation of the double slit producing the fringes? Part A, part B, part C, part D. ओके, अच्छा सबसे पहले तो फार्मूला बता दो, फार्मूला क्या होगा, कौन सा फार्मूला होगा इन दोनों में से। हाँ जी, शेर को एक। किससे पूछ रहे हैं? अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं। तुमसे ही पूछूंगा, तुम्हारी बारी चल रही है। अच्छा, पानी चाहिए। कौन से वाले फॉर्म में है? तुम्हें बता रहे हैं, क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन देख के कैसे पता चल रहा है, डबल सेट से आ रहा है पकड़ाई में, हाँ। नहीं। बस। नहीं आ क्यों? रहा। ब्रो डबल स्लेट जब भी बोलेगा तो उससे हम्म। आपको ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, वाई इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर एस, सही है हमेशा। ठीक ओके, है। क्लियर हुआ। हाँ। और अगर तुमसे बोलेगा डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये वर्ड, ये टर्मिनोलॉजी तुम लोगों ने समझनी है यार, कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, ये तुम्हें समझना है, ओके। ओके। परफेक्ट है, चलो। अब तुम्हें ये तो पता चल गया, सही है। अब देखो उसके अंदर उसने क्या कहा हुआ है कि वेवलेंथ तुम्हें दे रखी है और द फ्रिंज सेपरेशन वाई तुम्हें दिया हुआ है, राइट। वाई तुम्हें दिया हुआ है, दिस इज वाई, राइट। हम्म। एंड दिस इज वेवलेंथ। लैम्डा, सही। पहला पहला केस ये हो गया। दूसरा केस, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द डबल स्लिट एंड द वेरिंग स्क्रीन इज नाउ इंक्रीज
बाय 2 मीटर सही है। तो आपके पास जो है जो नई फ्रिंज सेपरेशन है वो आपके पास 3 हो रही है सही है। व्हाट इज हम्म, द सेपरेशन ऑफ द डबल स्लिट? ओके, डबल स्लिट सही है। तो अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, पता नहीं क्यों। देखते हैं, करते हैं सॉल्व, पता नहीं उतार ले जा रहे। तो पहले वाला हो जाएगा y इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर एस सही है। और उसने आपको लैम्डा बताया हुआ 600। ओके, और स्क्रीन में हम ले लेते हैं डी, ले लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, क्योंकि उसने हमें दे नहीं रखा। फ्रिंज स्पेसिंग हमें दी हुई 1 mm, यानी 1 एक्सपोनेंट -3 सही, ये पहला केस हो गया। दूसरा केस, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन इज इंक्रीज बाय 2। अच्छा, अब दूसरे केस के अंदर वेवलेंथ तो सेम ही रहनी है सही है। सो वेवलेंथ हमारे पास 600 रही, नैनोमीटर है, तो कन्वर्जन फैक्टर लगा लो एक्सपोनेंट -9 का, यहाँ पे भी आ जाएगा -9 का, और ये डी हो गया सही है। अच्छा, इन्होंने कहा है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द डबल स्लिट एंड द व्यूइंग स्क्रीन इज इंक्रीज्ड बाय 2 मीटर सही है। जब 2 मीटर से तुम बढ़ा रहे हो, इंक्रीज बाय 2 मीटर, तो इसका मतलब है कि डी जो है ट्वाइस हो गया। The fringe spacing increases to 3 millimeter. So this become 3 exponent -3. What is the separation of the double slit? Okay, so सबसे पहले तो separation of double slit तो सेम ही रहेगी, तो सबसे पहले तो हम D निकाल लेते हैं, फिर वहां से ही निकल जाएगा। Let's try। लेकिन यार D कैंसिल हो जाएगा, D+2 होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा S 600 एक्सपोनेंट -9 टाइम्स D ओवर 1 एक्सपोनेंट -3 सही। यहाँ से ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 600 एक्सपोनेंट -9 टाइम्स D+2 सही है, डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट -3 सही है। दोनों को इक्वेट कर दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व होगा, मैच लग रहा है राइट। सो 600 एक्सपोनेंट -9 टाइम्स D डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -3 इज इक्वल्स टू 600 एक्सपोनेंट -3, सॉरी -9 एंड D+2 राइट, और ये आपके पास हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट -3 सही है। ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, और ये 1 ज़ा और ये 3 सा राइट। सो बेसिकली आपके पास ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दिस एंड दिस गोज ऑफ राइट। ये सिर्फ यहाँ पे 3 बच जाएगा, D, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, ये ऐसे सिंप्लीफाई होकर ये रह जाएगा सही हो गया। सो अब D आपके पास आ जाएगा 3D इज इक्वल्स टू D+2 सही है। सो D को वहाँ पे लेके जाओगे तो हो जाएगा 2D, तो D1 आ रहा है, लो वाओ। तो हमारे पास 1 मीटर आया है D, तो अगर हम यहाँ पे अगर 1 रखें, सो देन इट वुड बी कितना होगा, 6 एक्सपोनेंट -6 बन जाएगा। इसको डिवाइड करो, कितना बन रहा है, 600 एक्सपोनेंट -9 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -3, सो -3 से तो 987, हाँ तो, और फिर 6 5 एंड 4, मेरे ख्याल से इतना ही बन रहा होगा। मिली कितना बन रहा है, ज़रा देख लो प्लीज़। 6 तो आ रहा है, 6 का फैक्टर तो आ रहा है, ये सही कर रहे हो। जी कर रहा हूँ, 1 सेकंड। सही आ गया, आ रहा है, तुम लोग के पास आ रहा है। जी सर, बी आ रहा है। बी आ रहा है, बी आ रहा है, परफेक्ट, सही हो गया। समझ में आया, कितनों को समझ में आया, सच्ची बताना, थोड़ा सा मुश्किल था। सर ये सब 1 मार्क के लिए कौन कह रहे हैं? है ना।
क्या कर सकते हैं? क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते यार। समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। जी। जी सर, आ तो गया। चलो परफेक्ट है, आगे आ जाओ। क्या ये हम कर सकते हैं? कर लो, ये कर लो। कौन है? जिनोविया रीड कर सकती हो? जिनोविया अवेलेबल नहीं है? कंसा आ जाओ, जरा कर लो। A diffraction grating with 500 lines per millimeter is used to observe diffraction of monochromatic light of wavelength 600 क्या ये कौन सा था नैनोमीटर. नैनोमीटर। The light is passed through a narrow slit, and the grating is placed so that its lines are parallel to the slit. Light passes through the slit and then the grating. An observer views the slit through the grating at different angles, moving his head from X parallel to the grating through Y opposite the slit to Z parallel to the grating on the opposite side. How many images of the slit does he see? है ना? कहना क्या चाहते हो वाली फीलिंग आ रही जी सर, है? ये सारी इंफॉर्मेशन है. अच्छा, पहले तो ऐसा ऐसा ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो मुझे बताओ कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा एक्सपेरिमेंट को देख के। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है तो साइन थीटा एन वाला. लैम्डा हाँ. इक्वल्स टू डी साइन थीटा, परफेक्ट। सही। और साथ में एक और फार्मूला भी होता है, डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर एन, राइट? कैपिटल डी इज अ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एन। ओके, पहले तो ये फार्मूला क्लियर है। जी. अच्छा जी, इसके अंदर जो है ना, इन्होंने 600 नैनोमीटर दिया हुआ है, सही है, और 500 लाइंस पर मिलीमीटर दिया हुआ है। उसको हमने कुछ जुगाड़ लगानी है, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहे हैं इसको भी समझते हैं। सबसे पहले तो हमने एंगल देखना है कि एंगल कहाँ से आएगा, और ये हाउ मेनी इमेजेस क्या मतलब है, सही है। सो देखो, जब ये जो आई है, ये बेसिकली क्या देखेगी? नंबर ऑफ स्पॉट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, राइट? क्योंकि स्क्रीन पे जब इंटरफेरेंस होगा, तो जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे ब्राइट स्पॉट बनेगा, ओके? और एक ब्राइट स्पॉट एज अ इमेज के तौर पे ये ले रहे हैं, राइट? सो हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट्स विल बी देयर, हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट विल बी देयर इन टोटल, ओके? इज दैट क्लियर खंसा, इज दैट क्लियर? जी सर. तो ब्राइट स्पॉट का पूछा, यानी यू हैव टू फाइंड दिस स्मॉल एन, ओके? ये बात तो आई होप सो क्लियर हो गई होगी, सही। अच्छा, अब एंगल का फड्डा है। उसने कहा कि द ऑब्जर्व व्यू द स्लिट थ्रू द ग्रेटिंग एट द डिफरेंट एंगल, मूविंग हिज हेड फ्रॉम एक्स पैरेलल टू द ग्रेटिंग थ्रू वाई, ओके? तो इसका मतलब है कि वो बेसिकली ये पूरी चीज यहां से लेकर यहां तक कंसिडर कर रहा है। एंगल कितना हुआ? 90. आ गया, बेहतरीन हो गया। अब आप सबसे पहले पहला फार्मूला इस्तेमाल करो, दूसरा फार्मूला कंबाइन करके यूज करते हैं, सही है। पहले तो दूसरा फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, वहां से डी निकालते हैं। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू, अब देखो कैपिटल डी उसने क्या कहा है? 500 लाइंस, लाइंस तो एन है, 500 नीचे आ गया। और उसने कहा पर मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर के अंदर 500 लाइन है, ओके? तो ये आपके पास आ गया डी, इसमें कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर. परफेक्ट, यहाँ से डी निकल गया। डी को निकाल के ऊपर वाले फॉर्मूला में हम रखते हैं, लैम्डा एन के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं। लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर। एंड डी जो भी आपने निकाला होगा वो साइन, अब थीटा हमने क्या निकाला? 90 डिग्री, राइट? सो यहाँ पे साइन 90 आ गया, सही हो गया। साइन 91 होता है, ओके? सो आपके पास आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू डी, आप यही ले लो, 1 जो भी आपने कैलकुलेट किया होगा वही आपके पास आ जाएगा डी, राइट? और इंटू 600 एक्सपोनेंट -9, सही है। ये तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, डी को अलग से निकाल लो, फिर डिवाइड कर लो उससे, राइट? सो एन बताओ कितना आ रहा है? यस, कौन सा कहाँ रह गई? जी कर. ओके ओके। 3.3 आ रहा 3.3, फाइन। तो क्या आंसर होगा आपके ख्याल में? है. अबे नहीं, उसने कहा हाउ मेनी इमेजेस ऑफ द स्लिट डज ही सी। हमने एंगल कितना कंसिडर किया? 90 कंसिडर किया, सही। जी. तो इसका मतलब है हमें यहाँ वाली साइड के इमेजेस पता चली, एंड दैट इज 3, ओके? हम्म. राइट? तो यहाँ वाली साइड पे भी हमें 3 ऑर्डर्स बनेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि स्क्रीन के एग्जैक्टली हम 2 हाफ करेंगे। ऊपर वाले हाफ पे जितने इमेजेस आएंगे, यानी जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे, नीचे वाले भी उतने नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे, राइट? सो 3 ऊपर बने, 3 नीचे बने, और एक सेंट्रल वाला है, तो कितने हो गए टोटल? 7, ओके?
क्या ये क्लियर है? जी सर। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, ओके। सर 6 नहीं होते? बचा 3 ऊपर हो गया, 3 नीचे हो गया, 6 हो गए। एक सेंट्रल वाला हो गया, सेंट्रल को हम रेफरेंस मान के कर रहे होते हैं, वो कहीं पे भी काउंट नहीं होता, वो एंड में ऐड होता है। समझ रहे? ओके। सही हो गया, ये बार बार आने वाला है, सही है। अच्छा, तुमसे कह रहा है इन विच सिचुएशन डज द डिफ्रैक्शन अकर? अ वेव बाउंसेस बैक फ्रॉम द surface, दिस इज द रिफ्लेक्शन. A wave passes from one medium to another, this is the refraction. A wave passes through an aperture, this is the diffraction. A wave from the two identical source superimposed, ये superpose, ये तुम्हारे पास है इंटरफेरेंस, ओके। देखो उसने आइडेंटिकल सोर्स लगाया हुआ है, और ये आइडेंटिकल सोर्स जो है तुम्हें कोहेरेंसी बता रहा है, ओके। ऑल चलो ये हो गया। आ जाओ भाई ये। अपर्चर क्या होता है? सॉरी, अपर्चर। अपर्चर स्लिट को कहते हैं ब्रो, स्लिट और स्लिट को कहते हैं, या फिर जो है ना एज को कह लो तुम, सही है ना? कि जो डिफ्रैक्ट, जो स्प्रेड कर दे लाइट को। ओके। ओके, मुबीन आ जाए बेटा, जरा पढ़ ले प्लीज। The diagram shows the arrangement of apparatus for young slit experiment and also part of the pattern formed on the screen with a ruler placed next to it. What is the wavelength of the light? हम्म, भाई सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। सर वो वाला लगेगा ना। याद होना चाहिए यार। ओ, y इज ये इक्वल्स अपना टू लैम्डा डी। अबे सामने लिख डी लो ना, आ एक गया। दफा एक दफा सामने लिख लो, ये दोनों लिख फॉर्मूले लिया मैं लिख बार लिया। बार पूछूंगा, वो बार बार बताना है तुम्हें, सही। वो इसी से फॉर्मूला याद होगा, ओके। अच्छा, y की जगह पे मैं x यूज कर रहा हूँ, सही, वही वही चीज, वही टर्मिनोलॉजी पेपर में यूज होगी। सो x इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर ए, ये फॉर्मूला ये मैं यूज कर रहा हूँ, राइट। उसको प्लीज थोड़ा सही कर लेना, बार बार यही बताना है ताकि ये चीज़ याद हो जाए, सही। तुम्हें उसने डी बता रखा है, दिस इज योर डी, दिस इज योर ए, राइट। एंड तुम्हें एस भी यहाँ से आ जाएगा, तुमने वेवलेंथ निकालनी है, ओके। अच्छा, एस देख सकते हो, एस कितना आ रहा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 मिलीमीटर का डिफरेंस है, सही है। सो दिस इज द 10 मिलीमीटर, ओके। और दिस इज वन फ्रिंज डिस्टेंस, दिस इज टू, एंड दिस इज थ्री, सही है। सो बेसिकली, तो बेसिकली जब आप डिवाइड करोगे टेन टेन को, 10 मिलीमीटर को 3 में, तो आपको एक्स पता चल जाएगा, ओके। सो दैट वुड बी 3.333, ओके। एंड लैम्डा को सब्जेक्ट बना लो, सो एक्स ए ओवर डी इज इक्वल टू लैम्डा। सही है। एक्स हमारे पास आ रहा है 10 एक्सपोनेंट -3 ओवर 3। ए तुम्हारे पास आ रहा है 0.9 एक्सपोनेंट -3, ओके। एंड डी तुम्हारे पास आ रहा है इंटू 5, ओके। निकाल दो कितना आ रहा है। सर कैलकुलेटर नहीं है। अरे यार, तुम्हारे पास औजार ही नहीं है, तुम जंग कैसे करोगे? अच्छा चलो मैं कर लेता हूँ। सो 10 एक्सपोनेंट -3 इंटू 0.9 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 15। सो ये तुम्हारे पास आ रहा है 600 नैनोमीटर। ऐसा तो आंसर ही नहीं है, ओके। सर वो नैनोमीटर के अंदर डिवाइड बाई 3 भी कर। डेढ़ में 3 किया यार, गलत किया गया। एक मिनट। हाँ 0.6 आ रहा है। ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है बी के आसपास बन रहा है मेरे, शायद कुछ 0.9, ये 3 और 5 मल्टीप्लाई किया 15 बना। एंड और क्या आएगा? ये इसी बी के आसपास आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा, क्या वजह है? अच्छा, थोड़ा सा ये ज़्यादा है, सही है, थोड़ा सा ये ज़्यादा आ रहा है। ये डिस्टेंस एग्जैक्टली नहीं आ रहा, थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, इस वजह से हमारे पास जो है ना, ये थोड़ा सा कम आ रहा है, सही है। हमारे पास हमने जो बेसिकली ये वाली वैल्यू ली है, ये हमने थोड़ी सी ज़्यादा एज्यूम की हुई है, इस वजह से हमारे पास वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है, सही है। तो अगर हम उसको कम करेंगे तो कम कम आ जाएगी, राइट। 2 मिनट रुक जा बेटे, 2 मिनट रुक जा, बस कंप्लीट करने लगे। सही हो गया, समझ समझ रहे हो बच्चों? 600 मेरे पास आ रहा है, वो एक्चुअली 5.4 है, क्योंकि हमने थोड़ा सा ये ज़्यादा लिया हुआ है, सही है। अच्छा जी, चलो हो गया, आगे आ जाओ।
जरा ये करा दो प्लीज, या एक मिनट रुको, ये बेकार है। और कंडीशन एबल द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस टू बी फॉर्म। अच्छा, इंटरफेरेंस फ्रिंज अगर है टू, सो अच्छा, टू लाइट सोर्स प्रोड्यूस विजिबल इंटरफेरेंस फ्रिंज ओनली इन अ सर्टेन circumstances which condition enable the visible interference fringes to be formed using a white light using an incoherent source। incoherent source में तुम्हारे पास जो है ना अजीब से कोहेरेंट पैटर्न, इनकंसिस्टेंट कोहेरेंट पैटर्न जनरेट होगा, तो वो मज़े का नहीं होगा, राइट। तो विजिबल सही नहीं होगा, सही। यूजिंग वन लाइट सोर्स विच इज पोलराइज एट एन एंगल, नहीं, यूजिंग अ सोर्स फ्रॉम विच द लाइट डज नॉट ओवरलैप। ए ही बन रहा है तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास जो वाइट लाइट होगी, सेंटर में वाइट लाइट होगी, फिर साइड में एक फ्रिंज, फिर दूसरा फ्रिंज, एंड तीसरा फ्रिंज, एंड सो ऑन। ओके, आ जाओ, ये आ जाओ, शहीर ये करवा दे प्लीज, शहीर। शहीर को एक। A diffraction grating is used to measure the wavelength of monochromatic light, as shown in the diagram. The spacing of the slits in the grating is 1.00 into 10 raised to the minus 6 m. The angle between the first order diffraction maxima is 70.0 degree. What is the wavelength of the light? ओके भाई, एक्सपेरिमेंट में डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग फार्मूला बता सकते हैं? तो एन दूसरा वाला फॉर्मूला। लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, राइट। हाँ ये वाला, हाँ ये वाला। सही हो गया। और डी के लिए हमने रिलेशन था, डी इज इक्वल्स टू कैपिटल डी ओवर एन, राइट। लेकिन खैर इसमें ये वाला यूज़ नहीं हो रहा। सो एन हमारे पास है, इसने कहा फर्स्ट ऑर्डर है, सो एन हमारे पास आ गया वन। और लैम्डा के अंदर हम इंटरेस्टेड है। डी हमारे पास जो है वो इसने दे रखा है, द स्पेसिंग ऑफ द स्लिट्स इज 1 एक्सपोनेंट -6, ओके। एंड साइन थीटा, अब थीटा क्या लेंगे भाई? थीटा जो है वो हम हमेशा रेफरेंस से एक तरफ को लेते हैं। सो थीटा तुम्हारे पास हो जाएगा 35, निकाल दो कितना बनता है, लैम्डा इज इक्वल टू हाउ मच? एक सेकेंड। आया कुछ? 5.737। 5.737 ये बन रहा है, सही है, क्लियर हो गया। हाँ। नैनोमीटर के अंदर आएगा एक्सपोनेंट -3 से, सही है। अच्छा जनाब, एट हा 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 सर बस करें। है। अब यार मैं सोच रहा था 10 क्वेश्चन और कर लेते। नहीं सर, सर टाइम सर है। एक तो ये इतने अजीब क्वेश्चन है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैंने इसकी वैसे 20 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रखे हैं, 30 और हो गए। दो दो बस, 2 क्वेश्चन और करते हैं, 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन, बस लास्ट 2 क्वेश्चन, उसके बाद चले ना। सही है। खंसा जरा ये रीड, बल्कि खंसा ने नहीं करना, खंसा ने से ये करवा लिया। मुबीन आप रीड करो बरा। Monochromatic light of wavelength 690 nanometers passes through a diffraction grating with 300 lines per millimeter, producing a series of maxima on a screen. What is the greatest number of maxima that can be observed? ओके, अच्छा जी भाई, देखो जब भी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले बताओ जल्दी। वो n lambda is equals to d sin theta. डी साइन थीटा, और दूसरा फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू कैपिटल डी d is ओवर एन। equals to d over n. परफेक्ट। अच्छा जनाब, सबसे पहले इन्होंने एंगल नहीं दिया हुआ, सही है, और ऑर्डर हमसे पूछ रहे हैं, सही है। तो वेवलेंथ हमें दी हुई है, वेवलेंथ हम प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। एन हमें नहीं पता, वेवलेंथ हमारे पास आ गई है 690 एक्सपोनेंट -9। ओके, डी की जुगाड़ बनानी है, सही है। और भाई साइन थीटा बता सकता है भाई? मुइन थीटा बता सकता है? देखो उसने बता कहा हुआ है सकते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर, ग्रेटेस्ट नंबर कब बनेगा? हमेशा 90 डिग्री पे बनेगा, हमेशा, हमेशा याद रखना, सही है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? जी सर। देखो, जो लाइट है वो लाइट जब डिफ्रैक्ट होगी तो वो लाइट मैक्सिमम 90 डिग्री जा सकती है, पीछे नहीं जा सकती क्योंकि पीछे स्क्रीन नहीं है, ओके। सो अगर वो कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर है, इसका मतलब है 90 डिग्री डिफ्रैक्ट हो रही है, राइट, ओके। तो ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री का, सही हो गया। सो 90 डिग्री आपने यहाँ पे रख दिया, क्लियर हुआ? अच्छा जनाब,
डी निकालना है। सो स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी ओवर एन। सही है। उसने कहा 300 लाइन्स, एन को आपने रिप्लेस कर 300 दिया n हुआ 300। हमारा। हाँ, और पर मिलीमीटर है तो डी को आपने रिप्लेस कर दिया 1 एक्सपोनेंट 1 एक्सपोनेंट -3। -3 से। परफेक्ट हो गया। डी की वैल्यू निकाल दो और उस डी की वैल्यू को रख दो कि डी की जगह पे साइन 91 हो जाता है। सो एन इज इक्वल टू डी हमारे पास आ जाएगा 1 एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 690 एक्सपोनेंट -9। ओके, निकाल दो कितना आ रहा है। फिर कैलकुलेटर में अरे यहाँ, हाँ 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 हाँ। घूम गया भाई मेरा, पता नहीं कैसे। तुम किसी को घुमा दो। कल यही ठीक करूंगा जो। है ना बेटा, पहचान लिया ना अगर उसने, तो फिर जब नहीं जब तुम पहचान रहे, बैठोगे ना टेंशन। तब तक तुम्हें उसकी याद आएगी। एक्सपोनेंट -9। ओके, आई एम गेटिंग 4.8। आंसर क्या होगा भाई? 4.8 आ रहा है बी सर। होगा। 5। बी। बी? अबे ना करो यार। ब्रो ब्रो ब्रो। सॉरी सॉरी सॉरी। 8.5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 8.5। 8.5 कैसे मल्टीप्लाई बाय 2 हाँ, किया? ओह। मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर +1 करेंगे हाँ, तो देखो 9 देखो के देखो। आसपास है। अरे अरे मेरे बच्चों, देखो देखो, एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो। देखो, 4 ऑर्डर्स कंप्लीट हैं लेकिन पांचवा कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, पांचवा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो यू आर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट इट इनटू अ हायर ऑर्डर। ओके, सो ये 4 ऑर्डर ही 4 × होंगे। 2 +1 यस, समझ तो गया। 9। परफेक्ट जी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, सही है। कंसेप्ट समझ गई है? सही समझ रहे हैं? जी सर। परफेक्ट। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है। सारे भागना नहीं प्लीज। ये वाला था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके सर, अल्लाह हाफिज, मिलते रुक हैं जा फिर यार आपसे इंशाल्लाह। प्लीज। सर अच्छा जी। सर इसका इसका आंसर सी है। तो वो तो मेरे को भी पता है, लिख रखा है मैंने सी है। तुम क्या होशियारी यहाँ पे हो? अच्छा, डिफ्रैक्शन। ये करवा दो, कंसा ये करवा दो। A monochromatic light of wavelength 5.30 exponent -7 meter is incident normally on a diffraction grating. The first order maximum is observed at an angle of 15.4 to the direction of the incident light. What is the angle between the first and second order diffraction maximum? आपको ये निकालना है। ओके, एंड फॉर्मूला क्या लगेगा जल्दी? N lambda is equals to d sine theta. परफेक्ट। एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। ओके, और ओके फाइन। अच्छा, ये तो आपको दिया हुआ है। पहले वाले जो फर्स्ट ऑर्डर है, तो उसमें आपको वेवलेंथ दी हुई है। अच्छा, मैं फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखता हूँ, ये चलो लिख लेते हैं। 5.3 एक्सपोनेंट -7। ओके, एंड डी साइन थीटा हमारे पास है 15.4। ओके, ये आ गया पहले वाला का केस। ओके, अब यहाँ से जो दूसरे वाले का केस होगा वो हमारे पास है जब सेकंड ऑर्डर है। सो सेकंड ऑर्डर के लिए लाइट तो हमारे पास सेम ही है, सही है। तो वेवलेंथ तो हमारे पास सेम है, 5.3 एक्सपोनेंट -7। ओके, एंड इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा में नहीं पता है, सही है। सो यहाँ से तुम डी निकाल लो, यानी 5.3 एक्सपोनेंट -7 डिवाइडेड बाय साइन 15.4 इज इक्वल्स टू डी। सही है। इस डी की जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो 2 साइन 15.4 सही है, डिवाइडेड बाय 5.3 एक्सपोनेंट -7 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। खंसा समझ में आया? जी सर। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रही हूँ। कैसे समझ में आया? मैं तो समझा ही नहीं। समझ रही, मैं वर्किंग कर रही हूँ। ओके ब्रो, नहीं नहीं समझ रही ना, सच्ची बताओ। अबे यार, देखो डी में मैंने डी रखा है, सही है। जी जी। और फिर हाँ मैंने वो है। कैंसिल करके मैंने वो कर दिया है, सही है ना। हम्म। चलो, और फिर यहाँ से साइन इनवर्स कर दूँ, या भाई मैं करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। सही है। डी मेरे पास आ गया, डी की जगह पे मैंने रख दिया 5.3 एक्सपोनेंट -7। सही है, डिवाइडेड बाय साइन 15.4
सही है, और ये आ गया साइन थीटा, ये ऐसे आ गया, दिस इज द प्लेसमेंट, सही। और ये कैंसिल हो गया इससे, सो आपके पास आ जाएगा 2 sin 15.4, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स, और ये आ जाएगा थीटा। ओके, निकाल दो थीटा कितना आता है। सर मेरा तो डी आ रहा है। अबे आ थर्टी क्या टू रहा है, वैल्यू तो बताओ ब्रो। 32.18। 32.18, सही। 32.18 बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आएगा, सही, यहाँ से यहाँ तक। ओके, एंड यू नो दैट कि उसने पूछा है कि फर्स्ट से सेकंड का बता दो, तो आपको सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले एंगल को, समझ गए हो ना। जी बस याद ये है। करना, सही हो गया। चलो बस, अब आज की कहानी यहीं तक हो गई है। मैंने इसमें तकरीबन तुम्हें कुछ क्वेश्चन, मैंने 20 क्वेश्चन रिकॉर्ड किए हुए थे, 30 तकरीबन 35 क्वेश्चन हो गए तकरीबन, सही। और बाकी इसके जो क्वेश्चन है, तुम इसको अटैम्प्ट करना, सेम पैटर्न पे आते हैं, सही, रट्टे वाले क्वेश्चन है। और थोड़ा सा समझ लो और थोड़ा सा रट्टा है लगा लो, हो जाएगा, सुकून से हो जाएगा, सही। ओके सर, ओके चलो, सर, मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।